Hello learners and welcome to our YouTube channel Pass Sure. I am here with a new MCQ series on Indian polity. हम आज एक नई MCQ सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के ऊपर और आज के सेशन में मेन फोकस विल बी ऑन द preamble of Indian Constitution. So if you are visiting this channel for the first time, do subscribe and also join the Telegram channel. The link will be in the description box for the PDF of MCQ series and lectures. सो यू मे बी फैमिलियर विद कि हमने इससे पहले भी एक MCQ सीरीज स्टार्ट की थी मॉडर्न इंडिया के ऊपर, वो हमने ख़त्म की है. इन द मीन टाइम देयर इज़ अनदर MCQ सीरीज गोइंग ऑन अबाउट द अकाउंटिंग टॉपिक ऑफ with special reference to JKSSB Finance Account Assistant exam. So if you are preparing for that exam, do watch that also. So without taking any further time, let's get directly into our topic. So the first question here will be of today's session. The Constitution of India borrowed the scheme of Indian Federation from the Constitution of, जो कि Constitution of India है, उन्होंने कहाँ से स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन बोरो किया है. ऑप्शन देखते हैं USA, कनाडा, आयरलैंड एंड UK. So you know that India is a federal state. Why? Because the powers are shared between center and state. So there is a division of power between center and state. And ये हमने कहाँ से लाया है? So the answer here is Canada. So we borrowed this scheme of Indian Federation from the Constitution of Canada. ठीक है. Next question. The Indian Constitution closely follows the constitutional system of, जो कि Indian Constitution है, ये किसे सबसे ज़्यादा closely follow करता है, किस constitutional system से? ऑप्शंस देखते हैं USA, UK, स्विट्ज़रलैंड एंड रशिया. सो अगर आप अभी एग्जामिनेशन हॉल में के हिसाब में होगे तो यू विल बी डायरेक्टली कटिंग आउट दीज टू ऑप्शंस एंड यू विल बी थिंकिंग दैट USA विल बी the option because we have like fundamental rights from USA, or you can say the Supreme Court from USA, the judicial review, the independence of judiciary. We have brought these things from the USA parliament system, but you should know that the most of the constitution that we brought from is from UK government or the British government, because if we look at the elections, like the first past the post system, FPTP हमने वो भी लाया है. पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो भी ब्रिटेन से है. रूल ऑफ लॉ और द लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो हमारा है वो भी कहाँ से हमने बोरो किया है? फ्रॉम ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर द फॉलोइंग इज अ फीचर कॉमन टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन? A single citizenship, dual judiciary, 3 lists are in the constitution, a federal supreme court to interpret the constitution. Okay. So ऑप्शंस में हमें देखना है कि इनमें से कॉमन फीचर कौन सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में. सो इफ़ यू आर अवेयर दैट अमेरिका में 2 सिंगल ड्यूअल सिटीजनशिप है, सो द ऑप्शन विल कैंसल आउट. इंडिया में सिंगल जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं है. एंड वी नो दैट वी बोरोड द सिस्टम ऑफ जुडिशरी फ्रॉम USA. So here is the federal supreme court to interpret the constitution that acts as a guardian of constitution. So the answer is D, but the federal supreme court to interpret the constitution. Okay. Next question. The inspiration of liberty, equality and fraternity was derived from American Revolution, French Revolution, Russian Revolution, of none of the above. जो कि आइडियाज़ है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फैटर्निटी, वो किसके डेरिवेटिव्स है, किस रेवोल्यूशन के डेरिवेटिव्स? दैट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि 1789 के आसपास हुई थी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आर द रेप्लिका ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ विच कंट्री? ब्रिटेन, USA, आयरलैंड एंड रशिया. जो कि इंडियन प्रेसिडेंट एंड PM है, दैट हियर सजेस्ट इज द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारी, वो किस स्टेट से रेप्लिकेट की करती है? सो यू विल बी अवेयर ऑफ द, हमने पहले ही बताया, मैंने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से बोरो किया? ब्रिटेन से. सो द पावर दैट आर रिजाइड इन द हैंड्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट आर सेम एज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटेन प्रेसिडेंट, एंड द पावर ऑफ PM आर सेम एज इन द बोथ नेशंस. ओके. So we see next question. The President of Indian Union has the same constitutional authority as the President of Indian Union जो है उसकी सेम constitutional authority किसके साथ होगी? पहले ही मैंने बता दिया, that will be with the British monarch. Okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट? इंडिया को कौन सेक्युलर स्टेट डिस्क्राइब करता है? We look at the options: fundamental rights, 9th schedule, directive principles, or preamble to the constitution. So here we go. कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही बार सेक्युलर वर्ड का यूज़ किया गया है, दैट इज़ ऑन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बाकी जगह कहीं पे सेक्युलर स्टेट का जिक्र नहीं किया गया है. In the parliament form of government, real powers are vested in Council of Ministers headed by the PM, President, Government and Parliament. जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें प्रेसिडेंट एंड पीएम जो होते हैं वो पावर शेयर करते हैं. बट इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट विथ हिज एग्जीक्यूटिव रियल पावर होल्ड करता है, एंड जो प्रेसिडेंट होता है वो खाली सर्मोनियल पावर होल्ड करता है. कभी किसी को अवार्ड देना है, कुछ हो, वो वही काम करते हैं. सो हेयर इट इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द पीएम. इट होल्ड्स द रियल पावर दैट ऑफ द स्टेट इन द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा इनमें से बेसिक फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. सो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, parliament form of government we apply that. Federal government is also there, we share powers between center and state. Independence of judiciary is also there, so the option here will be presidential government. Which of the following is a feature of parliament form of government? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कौन सा फीचर है इनमें से? वही लुक एट द ऑप्शन. एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, judiciary is responsible to executive, legislature is responsible to executive. So you know that the three main organs of the government are judiciary, legislature and executive. So you know that judiciary is independent here, so the option here will be executive is responsible to legislature. executive जो है वो accountable किसे है? legislator को. Which of the following feature does the Indian Constitution borrow from Weimar Constitution of Germany? कौन सा फीचर ऐसा है जो इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से बोरो किया है? द आइडिया ऑफ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, द मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, द इमरजेंसी पावर्स, प्रोविजंस कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल emergency. So the answer here is provision concerning the suspension of fundamental rights during national emergency. जो हमारे आर्टिकल्स है, फाइनेंशियल एमरजेंसी हो गई, या कोई देश हमारे देश पे हमला कर दे, उस टाइम पे एमरजेंसी लागू होती है. वही प्रोविज़न जो है, वही कुछ आर्टिकल आई थिंक 356 इज़ देयर. उन्हीं आर्टिकल्स को हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंड देयर सोर्सेज इज रॉन्गली मैच्ड? कौन से ऐसे फीचर्स है एंड देयर सोर्सेज जो कि नीचे दिए गए वो रॉन्गली मैच किए गए हैं? जुडिशियल रिव्यू, ब्रिटिश प्रैक्टिस, concurrent list, Australian Constitution, Directive Principles, Irish Constitution, Fundamental Rights, US Constitution. So you know that कि हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लाया है? US Constitution, that's also correct. Directive Principles from Irish Constitution, Concurrent List from Australian Constitution. So Judicial Review जो हमने लाया है, Power of Judicial Review is also from USA Constitution, not from Britain. So here it is wrongly matched, so the option will be option A. Next question, which constitution has inspired the Indian concepts of rule of law, parliament system and law making procedure? US Constitution, Britain Constitution, Canadian Constitution and all of the above. So कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने इंडिया की कॉन्सेप्ट्स को रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर दिया है? अगर आपको एक भी गैस इनमें से पता होगी, दैट्स पार्लियामेंट्री सिस्टम. कहाँ से लाया? मैंने अभी भी बोला ब्रिटेन से. वहीं से लॉ मेकिंग भी हमने लाई, वहीं से रूल ऑफ लॉ जो है वो भी हमने बोरो किया है. सो द आंसर विल बी ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन्ड टू वर्क एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है अभी ये फेडरल गवर्नमेंट है. कब ये एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट, कब इसके रियल जो पावर्स है वो प्रेसिडेंट के अंडर आ जाते हैं
and it becomes a unitary form of government. वो कब होता है? In normal times, in times of emergency, when the parliament so desires, at the will of president. So कब होता है? In the times of emergency, जो कि हमने कहाँ से लाया है? From Germany government, Germany constitution से. Okay. So here we go to question number 15th, that says, which of the following features of Constitution of India does not resemble the American Constitution? Written Constitution, federal form of government, fundamental rights and parliament form of government. So हमें इस क्वेश्चन में the question here asks is that कौन सा ऐसा फीचर नहीं है जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से मेल नहीं खाता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स ट्रू. अमेरिका एंड इंडिया बोथ हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयर इज आल्सो. फंडामेंटल राइट्स हमने वहीं से बारो किए हैं. देयर आर नोन एज द बिल ऑफ राइट्स इज देयर. अमेरिका में हम इनको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं. वाइल इन अमेरिका वी हैव द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट इज देयर. प्रेसिडेंट इज द रियल holds the real powers of the state. In India, the PM holds the real powers of the state with its council. Okay, so the answer will be parliament form of government that we have borrowed from British Constitution. Okay, which one of the following statements regarding preamble is correct? कौन सा ऐसा statement है जो regarding preamble जो है वो correct है? ठीक. It's not enforceable in the court of law. The Supreme Court has recently ruled that it's not a part of the Constitution. It has been amended twice. All of the above are correct. So अगर आपको पता ही होगा कि ये वाला पहला ही it is not enforceable in the court of law, that one is correct. But if you look at the other options, these are all wrong because the Supreme Court never ruled out that it is not a part of Constitution. It is a part of Constitution. It has been amended only once by 42nd Amendment, in which they put the words of sovereign, democratic and republic there in 1976, 42nd Amendment 1976. Next question we move. The Indian Constitution has borrowed the idea of preamble from. Idea of जो preamble जो है वो हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से borrow किया है? Italian Constitution, Canadian Constitution, French Constitution and Constitution of USA. So the answer here is Constitution of USA. Secularism means, secularism के क्या मायने हैं? Suppression of all religions, freedom of worship to minorities, separation of religion from state, a system of political and social philosophy that does not favor any particular religion, faith. So if you will be also sitting in exam, the options are designed in a way that it will ultimately confuse your mind. If you look at the first two options, you will ultimately disqualify them. Now you have heard that the secular state means that the religion and state are separate, so you will give the correct option as third. But no, here only says the secularism means. Secularism thought वो क्या है? It is a system and social philosophy that does not favor any particular religion, faith. If it was that what is secular meant in Indian government, so you maybe this was the correct option. If that was not there, if option 4 was not there, it is a system of political philosophy that does not favor any political or religious thought. So the answer will be this. 19th question, which one of the following statements is correct? Preamble of Constitution is a part of Constitution and can be amended under Article 368. Preamble of Constitution is not a part of Constitution and cannot be amended. Preamble is a part of basic structure of Constitution and can be amended if no change in the basic structure is made. Preamble can be amended by Parliament simply by an objective resolution. So the answer here will be this one is correct. Preamble is a part of basic structure of Constitution and can be amended only if there is no change in basic structure made. So we see that it was amended in 1976. The word socialist, secular and unity and integrity of nation were added in our Constitution by 42nd Amendment of the Constitution, 44th Amendment of the Constitution and 46th Amendment of the Constitution. So the question here says socialist and secular words जो है and unity and integration of nation वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कब ऐड किए गए थे? You know the 42nd Amendment of the Constitution. We move to next question.
The preamble of Constitution of India envisaged that it shall stand part of the Constitution. It could be abrogated or wiped out from the Constitution. It does not acknowledge, recognize, or proclaim anything about the Constitution. It has separate entity in the Constitution. So जो कि preamble of India है वो से क्या करता है, that is it is separate from entity in the Constitution. Okay, we see the next question. The correct nomenclature of India according to preamble is, correct nomenclature of India जो है वो क्या है according to preamble. So preamble आपको पता ही होगा, पहले मैं ऑप्शन में फिर हम उनको preamble को याद बोलेंगे. सोवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी. So the preamble is, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic and to secure all justice, fraternity, equality, liberty. So these are the correct nomenclature will be sovereign socialist secular democratic republic. Okay, so the next question is, India is democratic republic because there is independence of judiciary, the head of state is elected by the people, there is distribution of powers between the center and state, there is parliamentary supremacy. India democratic and republic क्यों है? If you look at the options, the independence of judiciary will not justify the question. The head of a state is elected by government, that is where the elections came in and it becomes a democratic state. Next question, there is a distribution of power between the center and that makes India as a federal state, and this makes India as nothing. So the answer here will be the head of the state is elected by the people. Next question, the preamble of our constitution is the part of constitution, contains the spirit of constitution, is no limited upon the granted power, none of the above. So the preamble of our constitution contains the spirit of our constitution, it is considered as the soul of our constitution. Which of the following is not a part of preamble of Indian constitution? Secular, socialist, democratic republic and federalism. So इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पार्ट ऑफ प्रीएम्बल नहीं है? सो हियर इट इज फेडरलिज्म. द सोर्स ऑफ इंडियन सोवरेनिटी लाइज इन, सोर्स ऑफ इंडिया की जो सोवरेनिटी है वो किसके हाथों में है? सोर्स उसका क्या है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पीपल ऑफ इंडिया एंड प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आंसर हियर विल बी प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Which of the following moved the objective resolution which form tiles basis of the preamble of Constitution of India in the Constituent Assembly on 13th December 1946? 13th December 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अपना मूव किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू. So the answer will be पंडित जवाहरलाल नेहरू. The Constitution of India is republican because it provides an elected parliament, provides for adult franchise, contains a bill of rights, has no hereditary elements. So the Constitution of India is republican because republic क्यों है? It has no hereditary elements. So we see there is elections after 5 years and we choose our ruler, we choose PM, we choose our representatives and we make them to rule to shape our country. In India, the concept of single citizenship is adopted from. Single citizenship का जो concept है वो हमने कहाँ से adopt किया? England, USA, Canada and France. So the answer here will be England. The Indian Constitution is regarded as, Indian Constitution जो है वो हमें क्या, वो उसके हम क्या रिगार्ड करते हैं? फेडरल, यूनिटरी, पार्लियामेंट, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन सेपरेट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन सेपरेट because if we look at that, the power is shared between center and states, but the more power is in the hands of center. Center can anytime take away the powers of state. Okay, the preamble enshrines certain ideals that were first spelled out in the speech of Jawaharlal Nehru on the banks of Ravi when he called for Purna Swaraj, the Nehru Report, a resolution adopted at Karachi session of the Indian National Congress,
objective resolution adopted by Constituent Assembly. So the question says that preamble contains certain ideals like fraternity, equality, justice, socialist, sovereignty, secular, democratic. These ideas were spelled first where, so you know that who moved it was all about the objective resolution, that was its source, which was moved by Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly in December 1946, 13th of December. So next question will be the part of constitution that reflects the mind and ideals of framers is, okay, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स, प्रिएम्बल और सिटीजनशिप. कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमें, जो कि इसके फ्रेमर्स है उनका हमें एक आइडियल उनमें उसके रिफ्लेक्ट होते हैं एंड उनका जो माइंड सेट था वो रिफ्लेक्ट करता है. सो द आंसर हियर इज प्रिएम्बल. The which of the following determines that Indian Constitution is federal? ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि डिटरमाइन, जो कि जस्टिफाई कर देगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल? A written and rigid constitution, an independent judiciary, vesting in residential powers with the center, distribution of powers between center and states. So the answer here will be distribution of power between center and states. The word socialist was added to preamble. Its main aim is to eliminate inequality in economic and political status, eliminate inequality in political and religious affairs, eliminate inequality in income and status and standards of life, eliminate class based society. So the word socialist जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब ऐड किया गया उसका एक एम क्या रहा था? eliminate inequality in economic and political status. The next question, the last question of today's session. Right to constitutional remedies comes under. Right of constitutional remedies जो है वो किस के अंडर आता है? फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और नेचुरल राइट्स. सो यू मे बी अवेयर ऑफ राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट्स आर्टिकल 32. वो किसके अंडर आता है? फंडामेंटल राइट्स के ऊपर. सो if you had liked the video, don't forget to like it, share it and subscribe the channel. Okay, so with this we conclude our session. I hope you had liked it.